Welcome back to the channel of Chem Pacific. In this video, I'm going to discuss with you halide cluster. I'm going to discuss with you the structure of rhenium chloride. Before that, if you're new to our channel, don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. And also, if you like your video, do press the like button. Now, let's get started. First of all, it is very important for me to make you understand that कोई भी स्ट्रक्चर आप करना चाहते हो उसके पीछे जो उसका साइंस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बहुत अच्छे से समझना इम्पोर्टेंट है अगर आप समझ जाते हो तो आपको कोई भी पॉइंट कोई नथिंग यू नीड टू मेमोराइज और सारे दुनिया के प्रॉब्लम्स भी लेके बैठना नहीं है यू कैन डू एवरीथिंग यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑन योर ओन सो वही मोटो है कि स्टूडेंट्स को इतने अच्छे से साइंस समझाओ so that students become capable of answering the questions on their own. They don't have to depend on other for solving each and every questions. Now let's get started. Now the structure of rhenium chloride is the molecular formula of rhenium chloride is Re2Cl8 2 minus. If you consider the oxidation state of rhenium to be X and you're having 2 rhenium, that is why 2X, and chloride is having the valency of -1, you're having 8 chlorides, so it is -1, which is equal to -2. If you solve it, you will get 2x is equal to 6, and therefore x is equal to +3. Now see students, now we have found out that the oxidation state in this complex of rhenium is +3. ठीक है? So how many halides are there? We're having 8 chlorine atoms, right? So, and since chlorine is what? Is an anionic ligand. So the nomenclature, अगर inorganic nomenclature करना चाहते हो तो 8 chloro, तो 3 8 है, so 8 chloro, you're having 2 rhenium, इसलिए direnate. Since this complex is an anionic complex, इसलिए जो metal होता है उसका नाम एट हो जाता है, मेटलेट हो जाता है, रेनेट, फेरेट, कोबाल्टेट, ऐसा एट हो जाता है. So the nomenclature is octachlorodirenate 3 ion. 3 means the oxidation state that we have just calculated right now. Now this X can be Cl, Bri, NCS, anything. Now always remember students that chemistry जो है, this is an experimental study. Whatever the experimental data are actually obtained, the theories and the postulates are made according to that in order to satisfy each and every experimental data. ठीक है? So पहले तो हम बहुत अच्छे से इसलिए स्टडी करेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या क्या है. ऑब्जर्वेशन ये है that अगर इस स्ट्रक्चर को देखते हो तो ऑब्जर्वेशन ये है that दिस रेनियम बॉन्ड जो एक्सपेक्टेड था अगर आपके पास एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते तो एक्सपेक्टेड जो था नियरली 2.7 आर्मस्ट्रॉन्ग होना चाहिए था या 270 पिकोमीटर बट इट हैज़ बीन फाउंड दैट इट इज़ 224 पिकोमीटर तो इट इज़ एनफ शॉर्ट एज एक्सपेक्टेड जितना हम एक्सपेक्ट किए थे उससे भी ये काफ़ी शॉर्ट है. नेक्स्ट है यू कैन सी दैट these halides, these halogens, which are enough big in size and they are electronegative elements, they actually adapt eclipse configuration, eclipse conformation. This is very important और बहुत ही interesting है क्योंकि ऐसा क्या मजबूरी है that ये जो halogens which are enough big in size और उसमें जो van der Waals interaction है and most importantly they're also enough electronegative elements. तो दोनों को staggered configuration में ही होना चाहिए था लेकिन they are adapting eclipse conformation and also one more information has been found that they are diamagnetic in nature. So ये है हमारा observation. ठीक है? So observation में क्या क्या है? Observation में है that the bond length is enough short. अगर वो बॉन्ड लेंथ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सॉलिड में वो 2.75 आर्मस्ट्रॉन्ग होना चाहिए बट कम्प्लेक्स में इट हैज़ बीन फाउंड टू बी 2.20 आर्मस्ट्रॉन्ग. वो क्यों है वो हमें देखना है. हम देखेंगे दैट इज ड्यू टू शॉर्ट ड्यू टू द क्वाड्रुपल बॉन्ड. ये क्वाड्रुपल बॉन्ड भी क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे. एंड इट अडप्ट सेकेंड ऑब्जर्वेशन में इट अडप्ट एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन. सो ये भी एक इंटरेस्टिंग सी फैक्ट है कि अब हमेशा हम जानते हैं कि अगर ऐसे क्लोराइड एटम्स होते हैं दे विल ऑलवेज अडप्ट द स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन. तो ऐसा क्या मजबूरी हो गया था दैट इट इज बाउंड टू एक्सेप्ट द एक्लिप्स कॉन्फिगरेशन. ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक. इट मीन्स अगर हम एक सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड को ही एक्सेप्ट करते वही थ्योरी को एक्सेप्ट करते तो वो पैरामैग्नेटिक होता.
लेकिन इट हैज़ बीन फाउंड दैट इट इज डायमैग्नेटिक. व्हाई इज इट सो? सो ये सारे जो आपके एक्सपेरिमेंटल डेटाज है, इसका जो एक क्वेश्चन मार्क है, ये सारे क्वेश्चन मार्क हमें एक्सप्लेन करना था. एंड ऑब्वियसली कोई भी चीज़ अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, सो इट्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टडिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तभी आप सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे. So this is the structure and bonding which I am going to explain before I explain and demonstrate you the electronic configuration of this. So as already I have informed you that the rhenium in this complex is in plus 3 oxidation state. So rhenium is actually having the electronic configuration of 5d5 6s2. Since it is in plus 3 oxidation state in Re2Cl8 2 minus, so it will be having the electronic configuration of 5d4. It will have 3 electrons less. So now let us do this. So this is your 5d, this is your 6s, this is your 6p. Clear? Now see students, since it is 5d4, it is having 4 unpaired electrons. Okay, it is having 4 unpaired electrons. Now the first bond formation that we are going to talk about is a dative bond between the rhenium and the chloride. What happens, this rhenium, it uses one of its d orbitals and resulting in the formation of hybridization. So the d orbitals get hybridized with 1s and 2p orbital and resulting in the formation of dsp2 hybridization. Now this dsp2 hybridized orbital, this is dsp2 hybridization. ठीक है. Now this dsp2 hybridization अगर हो जाते हैं तो आप जानते हो dsp2 अगर होगा तो इसका geometry, the orientation in space क्या होगा? Square planar होगा. Now the d orbital involved in the square planar geometry is always what I have already discussed in my earlier videos, that is always dx square minus y square. So one of the orbitals, ये हमें clear हो गया है that one of the orbitals over here is, this is orbital number 1. So orbital number 1 over here is dx square minus y square orbital, which results in the hybridization to form dsp2 hybrid orbitals, 4 dsp2 hybrid orbitals, and it results in the formation of dative covalent bond. मतलब rhenium के पास एक vacant orbital है and chloride के पास lone pair of electrons है. Clear? So the first is the dative or coordinate covalent bond between the halide and the metal. So ये हमें clear हो गया. The first orbital engages the dx square minus y square. Now let us move on. Now what happens? You have one unhybridized vacant pz orbital. ठीक है? Now usually we consider the bond axis to be the z axis. ठीक है? Always remember we consider the sigma bond axis to be the sigma bond axis mostly is considered to be the z axis. तो वहीं से आप लोगों को एक information अच्छे से मिल गया that the d orbital engaged will be dz square. Now this dz square orbital, it actually combined with pz, resulting in the formation of dp hybridized orbital, 2 dp hybrid, because though orbitals are getting combined, so you are resulting in the formation of 2 dp hybridized orbital. 2 dp hybridized orbital.
उसमें से one of them is engaged in the formation of sigma bond with the metal. So you are having since it is dp, obviously आप जानते हो तो ये क्या होगा, इसका orientation in space is definitely is going to be linear. Okay, its orientation in space is going to be linear. So you are having two dp hybridized orbitals, उसमें एक जो है that is engaged in the formation of the sigma bond with the other rhenium atom, which is engaged in the formation of the sigma bond with the other rhenium atom, and the rest one, remaining one, it remains as a non-bonding orbital. It remains as a non-bonding orbital. तो अभी तक हमने दो ऑर्बिटल हमारा यूज्ड हो चुका है, एक है dx² - y² and the next is dz². Now I already mentioned in my earlier videos a lot of time that dz² also contain some amount of electron cloud density in the xy plane. So that is why the dxy plane cannot take part in the formation of the pi bond. So the next thing, the next two orbitals engaged are orbital number 3 and orbital number 4. These two orbitals, orbital number 3 is the dxz orbitals and orbital number 4 is the dyz orbitals. These two orbitals are perpendicular to each other and these two orbitals result in the formation of the pi bond. Clear? These two orbitals result in the formation of the pi bond. Now see students, now the last one which is remaining is very important and that is your orbital number 5. Obviously सारे के सारे 4 orbitals आपका हो चुका है. All the 4 orbitals are now well explained what they are doing and the last one is remaining is nothing but dxy orbital. So it is clearly visible to all of you that dxy orbital is containing of one unpaired electron because यहाँ पे हमने देखा dz² is resulting in the formation of sigma bond, dxz and dyz they are resulting in the formation of the pi bond with the rhenium metal and the remaining is the dxy orbital. अगर ये यहाँ पर ही खत्म हो जाते, अगर as per जो हम कर रहे थे वहाँ तक ही खत्म हो जाते हैं तो we see that since one unpaired electron is present in the dxy orbital is containing one unpaired electron. ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर ही खत्म हो जाता तो उसे पैरामैग्नेटिक होना चाहिए था, है ना, लेकिन it has been found experimentally it is diamagnetic in nature. So this is chemistry. Chemistry is an experimental study. Whatever the theories आप बहुत सालों से जानते आ रहे हो, फिर भी जो observation है, experimental data है, वो आपको एक्सप्लेन करना ही है. अगर नहीं हो रहा है तो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करके आपको ऐसे थ्योरी या पोस्टुलेट स्टेट करना है जो कि आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा को सेटिस्फाई कर रहे. दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री. दिस इज व्हाट केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट. सो यहाँ पे नहीं खत्म हुआ है, ठीक है. सो क्यों नहीं हुआ है वही हम एक्सप्लेन करेंगे. पॉइंट नंबर 1 ये पैरामैग्नेटिक नहीं है. पॉइंट नंबर 2 अगर यही 3 बॉन्ड फॉर्मेशन होता तो उसका बॉन्ड लेंथ लगभग 2.74 आर्मस्ट्रॉन्ग होता. इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली इन द कॉम्प्लेक्स इट इज 2.24 आर्मस्ट्रॉन्ग, काफी शॉर्ट है. एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाई द क्लोराइड एटम्स आर अडैप्टिंग एक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. सो एक चीज मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, दैट इज अगर दो ऑर्बिटल जो है, 2d ऑर्बिटल, ठीक है. सो अगर 2d ऑर्बिटल जो है इन दोनों को मर्ज होना है, ठीक है. सो दोनों d ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन है, सो दोनों जो d ऑर्बिटल है इन दोनों का अगर ओरिएंटेशन है, ये अगर पीछे का रेनियम का ऑर्बिटल है, ये ओरिएंटेशन ऐसे मर्ज होना चाहिए, तभी दोनों ऑर्बिटल कैन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कैन ओवरलैप अमंग देमसेल्व्स. लेकिन अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता कि एक का जो ऑर्बिटल है, अगर सामने का जो रेनियम है, अगर इसका डी ऑर्बिटल ऐसा है, क्लियर, मैं एक रफ स्केच दे रही हूँ, ठीक है. एंड पीछे का जो डी ऑर्बिटल है उसका ओरिएंटेशन अगर ऐसा होता,
ये दो डी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी कभी भी मर्ज नहीं कर पाएंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टू डी ऑर्बिटल टू have this kind of orientation जहाँ पे दो d orbital जो है they can actually merge with itself resulting in the formation of a bond. तो ये जो third type of bond है this is known as the delta bond. This is known as quadruple bond, which is a quadruple bond, and this is the delta bond. So this is very important for the two d orbitals to have this type of orientation in space so that they can merge among themselves resulting in the formation of a new bond, that is the delta bond. और यही orientation होने के लिए ये जो आपका rhenium chloride है it adopts the eclipse configuration. Because हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, साइंस में हमने हमेशा पढ़ाई किया that क्या पढ़ाई किया हमने साइंस में, that since the chloride ligands atoms, since the chloride atoms जो है they are enough big in size and also they are extremely electronegative, the preferred and the stable configuration has to be the staggered one. यही हमारा स्टडी था, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल डेटा था वो हमें बोल रहे थे that no, it is actually adapting eclipse configuration. ठीक है, so that is why something was there which was actually forcing or actually making this chloride ligands जो है this ligand to adapt the eclipse conformation. What was that? That is the formation of this delta bond. क्योंकि delta bond formation लगे इस type of orientation होना चाहिए कि सामने का जो लोब है और पीछे का जो लोब है दोनों एक साथ merge करे, ऐसा orientation होना चाहिए. If they are having this kind of orientation, they cannot merge. So अगर वो staggered configuration होता तो इस type of orientations होते, तो अगर वो staggered होते तो इस type of होते, ठीक है. But once it attained the eclipse configuration, now these orbitals are now enough capable of resulting in the formation of the delta bond because now they can merge with each other. ये सामने का rhenium है और ये पीछे का है. Clear to all of you? I hope this is clear to all of you. So आप एक क्वेश्चन पूछेंगे मैडम ऐसा भी क्या है कि बिकॉज हम अगर बोलते हैं कि वो एक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन है तो इसके बाद तो हम इस बात को कभी भी डिनाई नहीं कर सकते हैं दैट ड्यू टू द एक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन इसका एनर्जी हाई हो जाएंगे, है ना, इसका एनर्जी तो डेफिनेटली हाई हो जाएंगे. कोई भी रीज़न की वजह से अगर वो एक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन होते भी है लेकिन जो आपका थियोरेटिकल जो साइंस है वो आपको ये बोल रहा है जब अगर ये दो बिग एटम्स, एक है वैन डर वाल्स इंटरेक्शन भी होगा एंड मोस्ट ऑफ देम दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, सो ऑब्वियसली यहाँ पे एक रिपल्शन तो क्रिएटेड होगा एंड ऑब्वियसली द कॉम्प्लेक्स इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हाई एनर्जी. तो ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम ये एनर्जी को, इस एनर्जी का क्या होगा? द आंसर इज ऑलवेज रिमेंबर दैट बॉन्ड फॉर्मेशन is a very stabilizing factor, means stabilization. That is, it lowers the energy. ये हमेशा याद रखना. So bond formation is a very stabilizing factor. It lowers the energy. So already due to the formation of two pi bonds, already एक sigma bond था, उसके बाद में ये दो pi bond formation हो रहा है, उसकी वजह से उस system का, उस complex का energy काफ़ी कम हो जाता है. That ये van der Waals जो force of interaction है दोनों में, जो repulsive force is acting between them because both of them are enough electronegative in nature and both of them are having bigger size. So ये इसके वजह से इसका जो एनर्जी हाई हो जाता है, ये दो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ऑल्सो अल्टीमेट जो डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसका एनर्जी कम होने की वजह से इसका जो एनर्जी हाई है इसे कंपेंसेट कर सकते हैं. एंड नाउ यू सी दैट जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन था all of them are well explained now. Number one, उसका जो
बॉन्ड शॉर्ट था, क्यों था? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रुपल बॉन्ड एंड दैट इज द डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये भी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है ना। सो द बॉन्ड इज शॉर्ट ड्यू टू द डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन एंड अगेन इट इज अडॉप्टिंग eclipse configuration because due to the eclipse configuration now this orbitals, the d orbitals now will be able to combine among themselves resulting in the formation of the delta bond. एंड वाई इज इट डायमैग्नेटिक? बिकॉज अब देखो अभी जो दो रेनियम एटम्स है, वाई इज इट डायमैग्नेटिक? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे स्टूडेंट्स अभी तक हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर लिया है, तो हमने देखा है दैट ये जो रेनियम है, सो दे आर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, एंड नाउ and 1 rhenium is actually resulting in the formation of dative covalent bond between the vacant orbital dsp2 hybridized orbital of rhenium, and the chloride is now acting as the lone pair donor and resulting in the formation of coordinate covalent bond. Now what is happening? See, अभी dxy में दोनों के पास ही एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कहाँ पे है? dxy। तो अभी आप बहुत ही अच्छे से समझ चुके हो why is it dxy। ठीक है, इसलिए इसे मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ही फाइंड, अगर आप भूल भी जाते हो 2 मिनट में आप खुद से ही फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ 1 sigma bond and 2 pi bond, now these rhenium atoms, they are enough close to each other, and since both of them are possessing one unpaired electron and both of them are in the dxy, तो दोनों का सिमेट्री भी सेम है, दोनों का क्या है? सिमेट्री भी सेम है, और दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। So there is a strong tendency for the formation of a fourth type of bond, that is the delta bond. There is a strong tendency of formation of fourth type of bond, that is the delta bond. Clear? So it results in the formation of the quadruple bond. It results in the formation of the quadruple bond. एंड यही क्वाड्रुपल फॉर्मेशन होने के लिए जो क्लोरीन एटम्स है, दिस एटम्स, क्लोराइड एटम्स जो है, दे आर एडप्टिंग द एक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन। इसकी वजह से दोनों ही रेनियम का जो डी ऑर्बिटल है ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में आ जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ मर्ज करके डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होने में सक्सेसफुल होते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे हमने जितने भी हमारा ऑब्जर्वेशन है सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर लिया। ठीक है, since one more delta bond formation is actually taking place, it is resulting in the pairing of the unpaired electron which was actually present in the dxy orbital. So जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन था वो बहुत अच्छे से हम लोगों ने वेल एक्सप्लेन कर लिया है। तो एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो जो भी मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू बताए थे वो मैंने बहुत अच्छे से एक शॉर्ट नोट्स बनाए, इसे देख लेते हैं। तो ये जो रेनियम क्लोराइड बॉन्ड है ये फॉर्मेशन होता है बिटवीन द dsp2 hybrid orbital of rhenium and the p orbitals of Cl, and it results in the formation of dative bond. It results in the formation of coordinate covalent bond, or which is also known as dative bond. उसके बाद क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। Now sigma bond formation is taking place when the dz2 orbital and the unhybridized pz orbital, ये दोनों जो है they lie along the bond axis, और दोनों hybridization करके दो orbitals कर रहे हैं। एक है is directed towards the other rhenium atom, and जो second atom है it is in the opposite direction, मतलब ये linear orientation करते हैं। तो पहले वाला क्या कर रहे हैं? It results in the formation of the rhenium sigma bond with the rhenium atom, while the second hybrid orbital जो है it forms an approximately non-bonding orbital. ये सब कुछ मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया है। एंड जब ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाते हैं तब उसके बाद dxz and yz orbitals जो है they result in the formation of d pi bond, that is the phase wise bonding. Okay, and इसके वजह से ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड ये एनर्जेटिकली इतना स्टेबल हो जाते हैं, इसका स्टेबिलिटी इतना
इंक्रीज कर लेते हैं दैट इसका जो एक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन के जो वैन डर वाल्स स्टेरिक रिपल्शन हो रहा था उसे वो बहुत अच्छे से ओवरकम कर पाते हैं. So which actually explains the eclipse configuration of this structure. क्लियर. जब दोनों ही पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद DXY में जो रिमेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहा था वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे कंबाइन अमंग देमसेल्व्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, इन द फॉर्मेशन ऑफ द डेल्टा बॉन्ड एंड द क्वाड्रुपल बॉन्ड. एंड दिस कैन ओनली बी, ये क्वाड्रुपल बॉन्ड तब भी पॉसिबल है जब इसका एक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, नॉट इन द स्टैगर्ड प्लेन. स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन में कभी भी ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2d ऑर्बिटल्स पॉसिबल नहीं है. तो बहुत अच्छे से मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आपको समझाया सो दैट अगर आप कभी भूल भी जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ यू नो द साइंस बिहाइंड इट, नाउ यू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यू कैन फाइंड इट ऑन योर ओन. क्लियर. सो ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है. तो एक बात हमने बहुत अच्छे से और भी समझ लिया दैट द डेल्टा बॉन्ड एंड द एक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. क्लियर. मतलब अगर एक डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन है तब उसे एक्लिप्स होना ही पड़ेगा और अगर वो कॉम्प्लेक्स एक्लिप्स है वहां पे भी आपको समझ में आ जाएंगे दैट यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस. सो दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. तो यही चीज जैसे मैंने आपको समझाया उसके ऊपर हम एक CSR के एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था वो हम एक्सप्लेन करेंगे. सो यहाँ पर भी एक शॉर्ट नोट मैंने दिया बिकॉज आई कंप्लीटली बिलीव स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है सो दैट वो सब कुछ जितने भी वो पढ़ाई करते हैं वो वोलाटाइल ना हो जाए. सो आई ट्राई टू मेक एवरीथिंग इन अ नोट फॉर्म. सो देखो ना द फर्स्ट ये मैंने नोट फॉर्म में दिया है. द फर्स्ट रेनियम क्लोराइड बॉन्ड जो है वो डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं एंड बिटवीन द Cl minus ligands and the DsP2 vacant orbital hybridized orbital of rhenium 3 plus which is having d4 electronic configuration. ठीक है. एंड उसके बाद जो फॉर्मेशन क्या क्या टाइप ऑफ बॉन्डिंग हो रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है, पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है एंड द डेल्टा बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है. यही क्वाड्रुपल बॉन्ड जो है इसकी वजह से क्या हो जाता है, द कॉम्प्लेक्स क्या बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक बन जाते हैं. क्लियर. एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ भी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो एक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं. उसे एक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना ही पड़ता है सो दैट डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन कैन टेक प्लेस. तो इसके एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक ये है, इसका भी सेम स्ट्रक्चर है. सो द ग्रीन highlighters are the consequences and this one is actually and the other one is actually explaining the bond formation. तो ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया. इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करवाती हूँ स्टूडेंट्स को, इसीलिए मैं साइंस के ऊपर फोकस करवाती हूँ सो दैट कभी भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट खुद ही सॉल्व कर पाए. तो उन्होंने दो स्ट्रक्चर दिया है एग्जाम. सो दिस इज CSIR नेट June 2018 part C question and they have given you two structures, this एक rhenium chloride, एक this about the osmium. Now see students, rhenium I have already explained with you that it is having the eclipse configuration due to the formation of the delta bond, and delta bond and eclipse configuration they are interrelated to each other and because of delta bond the eclipse configuration is taking place. Now what about this complex? Now let us study about this complex. So therefore यहाँ पर भी ऑस्मियम जो है, ऑस्मियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 5d6 6s2. Okay, now osmium जो है in this case it is having the oxidation state of what, again it is having the oxidation state of +3. अगर ये +3 हो गया so in this case osmium will be possessing the electronic configuration of 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे 5d5. ठीक है. तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 5d, this is 6s and this is 6p. So it will going to have 1 2 3 4 5. Now see यहाँ पे स्टूडेंट्स एक तरह कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और गलती भी करते हैं. वो सोचते हैं कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ओनली पॉसिबल व्हेन द लिगैंड्स आर strong field ligand. It's not that. There are three most important factors which are actually playing behind the pairing of the electrons. Point number one,
3D series is having less delta zero value, then you have the 4D, and then you have the 5D. So 5D elements have a strong tendency to pair up electrons. Next, the factor which is behind the pairing is the oxidation state. Now osmium in this case is having a +3 oxidation state, which is again enough high. And last is the strong field ligand होना चाहिए. ठीक है, अगर तीनों में से कोई भी दो अगर satisfied हो जाते हैं, then also pairing can take place. In this case, दो satisfied हुआ, एक है 5D orbital, एक है oxidation state is high, that is +3. So these factors actually help the electrons to get paired up. तो आप एक बात पूछेंगे कि मैडम यहाँ पे तो already 5D5 electronic config तो stable form में था. Why it is rearranging? The answer is again same. It is rearranging because the bond formation is always a very stabilizing factor. So every complexes in this world, in this universe, they always want to attain stability, more and more stability. अगर ये complex formation होता है, bond formation होता है, that will result in extra stability of the complex. That is why these 5 orbitals will now rearrange among themselves. This will result in pairing 1, 2, 3, 4, and the fifth one will come over here and result in pairing of the electrons. This pairing is possible because osmium is a 5D series element and it is having oxidation state of +3. Now the same story, यहाँ पे मैं इसे बहुत elaborate नहीं कर रही हूँ. Now it is the same story. यहाँ पे DsP2 hybridization हो जाएंगे and the chloride they will result in the formation of the dative bond. ठीक है. Again, this pz orbital and the dz2 orbital will result in the formation of the sigma bond with the another metal, and the remaining dxz and dyz they will result in the formation of pi bond with the metal, with the other osmium one. अभी इंटरेस्टिंग सी बात ये है, अभी हमें दिख रहा है that dxy के पास एक जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पेयर्ड है. As because it is paired, so it makes no sense of resulting in the formation of a further delta bond formation क्योंकि already paired form में है. Since dxy is now consisting of paired electrons, so there is no question of the formation of delta bond. अगर delta bond नहीं है तो फिर eclipsed configuration attain करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. क्लियर? सो अगर डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो eclipsed configuration attain करना भी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा. So that is why this complex osmium जो है, osmium chloride जो है, this complex is point number 1 already diamagnetic, because in this case dxy is consisting of paired electrons, already diamagnetic, and also it is staggered. Because staggered configuration always result in more stable configuration. तो इसे eclipsed configuration इसलिए होना पड़ रहा था because इसमें डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए दो d ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए था ताकि they can merge among themselves resulting in the formation of a new bond, that is the delta bond. लेकिन जब यहाँ पे paired है, there is no question arises of the complex to adapt eclipsed configuration. So this is staggered configuration, right? So the answer, this is 4 marks question, part C का question है. Answer A जो है will have the eclipsed configuration, and जो B है it will adapt the staggered configuration. ठीक है? The answer is 4 because now A we already studied that A is going to adapt the eclipse configuration because यहाँ पे delta bond formation is taking place. यहाँ पे क्या what is taking place? यहाँ पे delta bond formation is taking place. यहाँ पे
बट जो बी है, जो ऑस्मियम क्लोराइड है, जो बी है ये स्टैगर्ड, क्योंकि यहाँ पे नो डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, क्योंकि DXY में अभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर? सो सी स्टूडेंट्स, जब आप रेनियम क्लोराइड को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू अगर मैं आपको समझा देती हूँ, अगर आपने ऑस्मियम को नहीं भी पढ़ाई किया है, साइंस का मैजिक ही यही है कि आप जानते हो साइंस, उसके बाद इसका आंसर आप खुद कर पाओगे। दिस इज द मैजिक ऑफ साइंस। साइंस में कभी भी क्वेश्चंस मगअप करने की जरूरत नहीं है, कोई भी पॉइंट मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। साइंस विल ऑलवेज हेल्प यू टू रीच टू द आंसर. So what is science? Science doesn't mean that you need to know all the answers. Science means you need to reach to the answers. For that, understanding the science is very, very important. Okay, so one mistake, by mistake, I have written it as a sigma. So definitely it is not going to be sigma, it is going to be pi. Already explained, but by mistake I have written like this. So okay, so I hope you enjoy this video. Thank you for watching our video. Don't forget to subscribe our channel and also press the bell icon. And also if you like our video, do press the like button. Thank you.